Hello and welcome to Evolution IAS. Starting from today, we have come up with a free initiative on our YouTube channel. In this series, we will be covering your current affairs for Prelims 2020, starting from the month of March till the month of August 2020. We are doing this because we had conducted a small survey among our students and we realized that previously the prelims date was 31st May, so the students had their current affairs prepared till the month of Feb. But then, because of uncertainty from the UPSC side and also because of COVID lockdown, when the new date came, that is in October, first week, many of our students are not well prepared starting from the month of March. They were a little underconfident. So, in this series, we will be covering current affairs from March to August, which is very important for your prelims 2020. And for that, we will be selecting and curating very important topics which are important for only prelims. रिगार्डिंग मेंस, यहाँ पे मेन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं कराया जाएगा. आवर कंप्लीट फोकस विल बी ऑन प्रीलिम्स. तो यहाँ पे प्लान क्या है हमारा? प्लान ये है कि दिस सीरीज विल गो सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो एंड क्रोनोलॉजी वाइज ऑल्सो. एंड हाउ डू वी डू दैट? टेक फॉर एग्जाम्पल आवर फर्स्ट लेक्चर. आज भी हमारा पहला लेक्चर है. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर I will be covering some important topics regarding ranks, indices, reports from the month of March only. So हमने जब इसके स्टडी की, मार्च के करंट अफेयर की, देखा जब न्यूज़पेपर, तो वी हैड ओनली 5 टॉपिक्स रिलेटेड टू रिपोर्ट्स, इंडाइसेस एंड रैंक्स. बट दीज आर very important topics. The questions have been asked previously and the questions will be asked again. And when we finish this topic from March, then we will move to April, then May, and then again we will come back to March and start with a new topic and again go to April, May and then June. Our plan is that by mid of July, we will be completing all your pending portion from the month of March to May, June. And by mid of July, we will be starting the fresh lecture day by day basis. The current affair comes and in that night only, we will be covering it up for you. And this process will go till August month because September month current affair is not important for the prelims. So without wasting any time, now let us start with the lecture. In this lecture of almost 30 minutes, we will be covering these 5 topics. These are all 5 topics related to reports, indices, ranks, and all of this news came in month of March. The first topic is World Happiness Report 2020. This report came on 20th of March. And why did it come on 20th of March? Because 20th मार्च को यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस डे डिक्लेयर किया था बहुत पहले. तो जो रिपोर्ट आई, द रिपोर्ट केम ऑन 20th ऑफ मार्च, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे. दिस इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड इन यूनाइटेड नेशन देयर इज पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. इतना बड़ा सा नाम है. इसने ये रिलीज किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. इसकी सिचुएशन देखेंगे, इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है वो देखेंगे, प्रोसेस क्या है, रैंकिंग करते कैसे हैं वो देखेंगे. The second topic will be World Water Development Report. This is also released by United Nations. But that body which is responsible for World Water Development Report is United Nations Water. So we will see the World Water Development Report and also see the body, that is UN Water. What is that body? When was it created? Then we will go to report on progress of Beijing Declaration. Here we need to understand what is Beijing Declaration. Beijing Declaration was a meeting of United Beijing, China. It was done in 1995. इसको ऑर्गेनाइज किया गया था चाइना में 1995 में. The document which came out of that meeting is known as Beijing Declaration and Platform for Action. And now in 2020, that thing has completed 25 years. So to commemorate that event, to remember that event, this report has come, report on progress of Beijing Declaration. And when we see the 5th topic, that is Gender Social Norms Index released by United Nations Development Program, that also relates to Beijing Declaration, क्योंकि ये भी आया है Beijing Plus 25 के लिए ही, और ये इसका जो है फर्स्ट एडिशन है जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स का, क्योंकि बीजिंग के लिए डिक्लेरेशन के लिए 25 ईयर्स जो हैं 2020 में पूरे हो गए हैं. एंड द 4th टॉपिक वॉज फ्रीडम इन वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट. देखिए, इसको कोई यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं निकालती है, कोई मल्टीनेशनल ट्रीटी से बनी हुई बॉडी नहीं निकालती है. दिस रिपोर्ट, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, इज रिलीज्ड बाय अ यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ दैट इज एन इंटरनेशनल वॉचडॉग सीइंग द फ्रीडम लेवल इन द वर्ल्ड एंड इन डिफरेंट कंट्रीज. सो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया? इंडिया किस तरफ मूव कर रही है? वी विल सी दैट. So let's start with the first topic, that is World Happiness Report 2020.
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में UNSDN भी बोलते हैं या UNSDSN भी बोलते हैं। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था मार्च 20 को, बिकॉज मार्च 20 इज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। एंड व्हेन डिड दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कम? In 2012, United Nations General Assembly took a place that internationally at the global level, we will celebrate World Happiness Day every year on the date of March 20, and in this particular date only this report was released also. So total how many nations were surveyed? 156. Now the question arises, all of the UN nation? No, not all member of the United Nations were surveyed, because United Nation has more than 190 countries. Out of that only 156 nations were surveyed. इसमें होता क्या है, हैप्पीनेस की स्टडी की जाती है और कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है। बिफोर द फाइनल इंडेक्सिंग एंड द रैंकिंग, अ सर्वे इज conducted and the people are asked questions. That survey or poll is called Gallup World Poll, that has 6 variables. 6 variables are GDP per capita, social support, health life expectancy, freedom कितनी है कंट्री में, generosity among the people, and absence of corruption, whether the country is corrupt, how do people say it. The questions are asked based on these 6 variables in Gallup World Report. The results come. But now suppose, consider a situation, there is an authoritarian government. For example, take North Korea. In North Korea, do you think people will say anything against the government? No, they won't say. Probably I feel that North Korea not at all even participates in this. But anyway, consider any country where we have an authoritarian government. The people won't speak against the government. So after asking these questions from the people in Gallup World Poll for rationalizing the results, these results taken from the Gallup World Poll are correlated with other factors. For example, GDP of the country, social security of the country. Then only the final result, final index is released after rationalizing it. So what are the highlights of this report? First of all, understand that any report about freedom, development, these Nordic countries are always at the top. Almost. I'm not saying always, almost. So in this ranking of happiness, rank 1 consecutively 3 साल से 3 ईयर से यहाँ पे फिनलैंड है, और 2020 की रिपोर्ट में भी फिनलैंड हैज़ गॉट द रैंक 1. साथ ही साथ ये देखा गया, इन द बॉटम वी हैव कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, साउथ सुडान, अफगानिस्तान. What is common among these countries is that they are affected by violence and extreme poverty. Take for example South Sudan. We know that South Sudan or North Sudan, we have rampant violence going on. In fact, the country was divided. Afghanistan, we have Taliban issue. So the violence afflicted countries. Then Zimbabwe has political problems also, and the poverty also. So Zimbabwe is also ranked low. So come to now India's performance. India की performance क्या है? प्रॉब्लम क्या इंडिया की हुई है कि लास्ट टाइम जब रैंकिंग की गई थी तो लास्ट ईयर इंडिया वाज रैंक्ड एट 140. नाउ इंडिया इज रैंक्ड एट 144. तो हमारा ये कंडीशन जो है -4 हो गया. वी वर एट 140, नाउ वी ड्रॉप टू 144. दैट्स ए वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. More problematic than this 144 rank is what? That all your South Asian neighbors, that is Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, all are ranked above you in Global Happiness Report. Nepal at 92, Pakistan at 66, Bangladesh 107, and Sri Lanka 130. You don't have to remember the ranking of Nepal, Pakistan, Bangladesh, but you should understand that in South Asia, India is ranked lowest and all its neighbors are at better situation. Also, one more problem with India is that it is the first time that India came in the bottom 15 group of countries. Those are the most unhappy countries, bottom 15 countries. India is the new entrant there. India ने वहाँ पे एंट्री मारी है कि ओके मैं भी अनहैप्पी हूँ टॉप ये बॉटम के 15 कंट्री में. ये बड़ी प्रिकैरियस सिचुएशन है. और क्या देखा गया इंडिया के बारे में पार्टिकुलरली कि इंडिया का अर्बन और रूरल जो एरिया है उसमें हैप्पीनेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. ये तो चलिए कॉमन चीज़ है कि अर्बन और रूरल में एक डिफरेंस है हैप्पीनेस में. एक और खास बात क्या है कि पेरी अर्बन पॉपुलेशन वाज हैप्पियर देन अर्बन पॉपुलेशन. व्हाट इज दैट? कंसिडर एन अर्बन सेंटर, फॉर एग्जांपल दिल्ली, न्यू दिल्ली, एंड कंसिडर इट्स पेरिफेरल एरिया, दैट इज पेरी अर्बन एरिया. इट वाज ऑब्जर्व दैट more than New Delhi, the surrounding area was more happy. Now you can guess how does that happen? The central Delhi is obviously affected by congestion, traffic problem, pollution, but the perimeter area, that is peri-urban area, that is reaping the benefits of being a bit of urban also.
and the pollution level, congestion level, crowding level is less. So that's why it was observed that peri-urban population was happier than the urban population in India. तो ये है गए हमारे सारे रिपोर्ट का जो हाईलाइट था वो हो गया. अब इसको रिलीज करती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. तो वी नीड टू लुक अबाउट दिस बॉडी ऑल्सो. व्हेन वाज दिस क्रिएटेड, वेयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन? This United Nations Sustainable Development Solution Network, this body was created in 2012. And what is the agenda, the purpose of the organization? See, you have these two important things in world today. Sustainable Development Goals, Millennium Development Goals came in 2000 to 2015, right? Millennium Development Goals 2000 to 2015. And 16 to 30, we have Sustainable Development Goals, right? So, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बहुत सारे गोल हैं, 17 गोल्स हैं, उसके अंदर ढेर सारे टारगेट हैं. वी नीड टू फुलफिल दोज टारगेट्स बिफोर 2030. एंड पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2015 इशू, COP21, यू नो दैट. ये दोनों जो हैं, क्लाइमेट और आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अब वर्ल्ड में इनके लिए काम तो हो रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन, बट द वर्क इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, नॉट वेरी एप्ट. So this organization, United Nations Sustainable Development Solution Network, it mobilizes the global scientific and technological expertise, and in that way it promotes the practical problem solving for achieving these goals, Sustainable Development Goals and Paris Climate Agreement goals and targets. Next, the important thing you should know, where is this body? In United Nations body, this body was created in 2012, and in United Nations, this body is present under the United Nations Secretary General. So, for example, you take ISRO. ISRO directly comes under Prime Minister. Similarly, this UNSDSN comes directly under the United Nations Secretary General. Now, in the comments, you can comment and tell me who is the United Nations Secretary General today. तो ये जो है UNSDSN बस इतना ही करता है क्या? एक ही रिपोर्ट निकालता है? नो, इसके अलावा भी और रिपोर्ट हैं. UNSDSN जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेर्टेल्समैन स्टिफ्टंग. बेर्टेल्समैन स्टिफ्टंग के साथ मिलके ये पब्लिश करता है एनुअल एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट सिंस 2016. ये दोनों जो रिपोर्ट हैं, पब्लिशिंग एनुअल एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड्स ग्लोबल रिपोर्ट, ये दोनों यूएनएसडीएसएन और बेर्टेल्समैन स्टिफ्टंग मिलके पब्लिश करते हैं. इसको याद रखिएगा, रिमेंबर दैट. आवर नेक्स्ट रिपोर्ट इज वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट. एज आई टोल्ड यू, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय UN वाटर, बट इसकी जो पब्लिशिंग होती है वो यूनेस्को करता है ऑन बिहाफ ऑफ UN वाटर. दिस यू शुड very clearly know that this report, the research and everything, the report is prepared by UN water, but the publication is done by UNESCO. Both are United Nations organization helping each other. ये जो रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, एवरी ईयर द रिपोर्ट हैज ए टाइटल, अ थीम. सो दिस ईयर इट इज वाटर एंड क्लाइमेट चेंज. यू नो दैट क्लाइमेट चेंज हैज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, particularly fresh water availability, and this world water development report relates to fresh water availability only, management of fresh water, the policies regarding fresh water, uses of fresh water, reuses of fresh water. This world water development report deals with these topics. So what does this report do? This gives an overall picture of the state. What is the state of the fresh water? What are the uses and what is the management practices over the world? तो ये जब आपको पता चल जाएगा कि क्या स्टेट है इसकी, क्या यूजेस हो रहे हैं, क्या मैनेजमेंट हो रही है, तो वर्ल्ड के जो पॉलिसी मेकर हैं, जो कंट्रीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, जो इंटरनेशनल बॉडी हैं, उसके हिसाब से अपने पॉलिसीज़ में ये मॉडिफिकेशन कर सकेंगे कि फ्रेश वाटर की जो है रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए और हाउ डू वी नॉट मेक दैट अ स्केयर्स रिसोर्स अ इवेडिंग रिसोर्स. सो दैट इज दिस 2020 एडिशन जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट एड्रेसेस द क्रिटिकल लिंकेज बिटवीन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, इफ यू वांट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर वाटर, फ्रेश वाटर फ्रॉम द चेंजिंग क्लाइमेट. There is a very good notice by this report. The report says that even when water is a scarce resource, becoming a scarce resource, fresh water, and very important, still the international climate agreements do not have this component. Even if they have this component of water, that is insignificant or ignored.
So we need to include water availability, freshwater resources, water management as a very strong component in international climate related agreements, including the Paris Climate Deal. It says that water has to be there, water importance has to be there, because water plays a role in food security. You can survive without oxygen. There are many organisms, they will survive without oxygen, for example bacteria, some bacteria, but without water one cannot survive for long. So food security, energy production, economic development, poverty reduction, all of these things, all of these are components of sustainable development goals. All of these targets can be achieved only if we have water availability in the world. So report says that, concludes that, first we need to reduce the climate change drivers itself. We need to reduce the climate change itself. For example, we need to reduce the global temperature, and also we need to reduce the impact of climate change on freshwater availability. And for that we need to modify our lifestyle, and we need to use and reuse the earth's limited water resource in a way that it is managed very well and it doesn't become a scarce resource. सो नाउ लेट अस सी द यूनाइटेड नेशंस वाटर बॉडी ऑल्सो. ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसका देखिए काम क्या है. दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर. व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग वर्क? दिस ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स द यूनाइटेड नेशन एंटिटीज विच आर इन्वॉल्व इन वाटर एंड सैनिटेशन इशूज. यू आर गेटिंग दैट? यूनाइटेड नेशन की जो भी एंटिटी होगी या इंटरनेशनल एंटिटी होगी, उनको ये कोऑर्डिनेट करवाएगी. अगर वो एंटिटी वाटर और सैनिटेशन से डील कर रही होगी तो, और कोऑर्डिनेट किससे करवाएगी? आउट ऑफ यूनाइटेड नेशन के जो बाहर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर उनका भी फंक्शन वाटर और सैनिटेशन से, टेक फॉर एग्जांपल सुलभ इंटरनेशनल दैट डील्स विद सैनिटेशन इशूज. तो व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन यूएन वाटर विल डू दैट कि यूनाइटेड नेशन का कोई बॉडी है जो कि सैनिटेशन से डील करता है, उसको ये कोऑर्डिनेट करवाएगी सुलभ इंटरनेशनल से, ताकि वर्ल्ड के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो यूनाइटेड नेशन का मैंडेट है उसको ये एनजीओ जो हैं अपना एक कंपोनेंट बनाएं और उसको फुलफिल कर पाएँ. ये एजेंडा है इसका. This was created in 2003. So it has members and partners. I told you this is a coordinating body between UN entities and international organizations which are working for water and sanitation issues. So the members will be United Nations member. What members? United Nations agencies, United Nations programs regarding water and sanitation, and the funds related to water and sanitation, all of which should be related to water related mandate होना चाहिए सारे का. ऐसे यूनाइटेड नेशन के एजेंसी, प्रोग्राम और फंड्स जिनका वाटर रिलेटेड मैंडेट है वो इसके मेंबर होंगे. अब मेंबर तो होंगे क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, लेकिन पार्टनर तो होंगे, वो तो एक्सटर्नल होंगे, बाहर के होंगे. तो व्हाट आर द पार्टनर्स? ऑब्वियसली एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड द पीपल एक्टिवली इन्वॉल्व इन वाटर कंजर्वेशन. सो इन द कॉमेंट सेक्शन टेल मी दैट हु इज नोन एज वाटर मैन ऑफ इंडिया. International organization, professional unions, associations you make for water conservation, those can be its partners, and the members will be situated in United Nations agencies, programs and funds of the United Nations which are related to water. So what do these members and partners do? ये जो मेंबर और पार्टनर हैं इसके, ये इन्फॉर्म करते हैं पूरे, तो इनको पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पूरा सर्वे करते हैं कि वाटर और सैनिटेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं. फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन, वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी सर्वे करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, उसका रिपोर्ट जो होगा प्रोग्रेस पे, उसको रिपोर्ट को बना के आपस में ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे. एंड देन आफ्टर दिस कोऑर्डिनेशन द रिपोर्ट विल बी प्रोड्यूस, एंड 2 एनुअल ग्लोबल कैंपेन चलते हैं इसके बेसिस पे. एक तो चलता है वर्ल्ड वाटर डे और दूसरा चलता है वर्ल्ड टॉयलेट डे. सो कैन यू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे एंड व्हेन इज वर्ल्ड टॉयलेट डे? कैन यू टेल मी? प्लीज टेल मी. Now come to gender equality, a very good topic. Report on progress of Beijing Declaration. This is a report on progress of Beijing Declaration. So we need to understand what is Beijing Declaration. First of all, see, in 1995, as I told you, United Nations members came to Beijing in China. They sat there and they talked about gender equality, inequality, the issues faced by the women. And there came the declaration and document which is known as Beijing Declaration and Platform for Action. It is the most comprehensive policy agenda for gender equality till now. It was adopted in 1995. So 2020 is the 25th anniversary of this meeting. So regarding that anniversary, to commemorate that anniversary, to evaluate कि कितना progress हुआ है तब से, आपका जो UNICEF है और प्लान इंटरनेशनल है और UN विमेन है, आई विल बी डिस्कसिंग
प्लान इंटरनेशनल, यूनिसेफ यू नो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, उसके अलावा प्लान इंटरनेशनल, यूएन वीमेन भी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। प्लान इंटरनेशनल और यूएन वीमेन जो है मैं आपको अगली स्लाइड में डिस्कस करके बताऊंगा। सो दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड टुगेदर and they prepared a report over how much progress we have made since 1995 over Beijing Declaration and Platform for Action। इस डॉक्यूमेंट का भी एक नाम है, टाइटल है A New Era for Girls, Taking a Stock of 25 Years of Progress। Exactly the purpose of the report and name of the report is same, taking a stock on 25 years of progress, only the new thing is added, that is a new era for girls। So very obviously the report takes a stock of the progress made since 1995। हमने बीजिंग डिक्लेरेशन पे कितना प्रोग्रेस किया है उसको ये रिपोर्ट देखेगा। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज यूनाइटेड नेशन वीमेन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन वीमेन एंड प्लान इंटरनेशनल। So we need to discuss UN Women and Plan International. What is UN Women? See, UN Women was also created by United Nations General Assembly in 2010 and it is dedicated to gender equality and the empowerment of women. Very simple. And what is Plan International? This is not a United Nations body. It is an NGO situated in England. It is an independent development and humanitarian organization and it works for the advancement of children's rights and also the equality for girls, that is gender equality. That's why it participated in evaluation of Beijing Declaration. Now let's come to our next topic, that is Freedom in the World 2020 report। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रिपोर्ट कोई यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं निकालती, इस रिपोर्ट को निकालती है एक एनजीओ, एन एनजीओ सिचुएटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। नेम इज फ्रीडम हाउस। It conducts a survey worldwide and tells us that what is the level of freedom in different countries. It is a US-based non-governmental organization. First of all, see the India's rank. India's rank is 83rd position and the total countries surveyed were 195 countries. And the problem is that India is ranked at 83rd position with Timor-Leste and Senegal. आप खुद सोचो, टिमोर लेस्टे एंड सेनेगल जो हैं काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे फ्रीडम वगैरह काफ़ी कम है, डेमोक्रेटिक राइट्स काफ़ी कम है। इंडिया हैज़ गॉट 83rd पोजीशन विद दिस कंट्रीज टुगेदर। दिस थ्री कंट्रीज मेक द 83rd पोजीशन। ऑल्सो दिस रैंकिंग हैज़ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज। सो वन कैटेगरी इज फ्री, this is the free, below that you won't be a free country itself। So India is ranked at just above the last country where this free category ends and not free category starts। India was near bottom among countries categorized as free with only Tunisia receiving a lower score। जब आप ट्यूनीशिया के नीचे चले जाओगे तो फ्री कैटेगरी का आप रहोगे ही नहीं फ्री वाले कैटेगरी में। तो इंडिया की इतनी खराब रैंकिंग है कि 85th रैंक से जो है नॉन फ्री कैटेगरी शुरू हो जाती है और इंडिया यहाँ पे 83rd पोजीशन पे है। और एक बात, ये एक और थोड़ी ग्रेवस सिचुएशन है कि इंडिया स्कोर हैड द वर्स्ट डिक्लाइन अमंग द वर्ल्ड्स 25 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज। आपको पता है इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड इज यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना इज नॉट काउंटेड एज डेमोक्रेसी, इट इज ए कम्युनिस्ट कंट्री। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इज नॉट प्रेजेंट इन चाइना। द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर जस्ट फॉर द नेम सेक इन चाइना। सो world's 25 largest democracies, in that India is also there, and in that category of world's 25 largest democracies India has the worst decline। इंडिया की जो रैंकिंग है सबसे ज़्यादा नीचे गिरी है, ये ध्यान देने की बात है। इंडिया ने स्कोर क्या किया है? देयर आर टू कंपोनेंट्स, पॉलिटिकल राइट्स कैटेगरी एंड सिविल लिबर्टी कैटेगरी। पॉलिटिकल राइट में इंडिया का सिचुएशन थोड़ा ठीक था, इंडिया गॉट 34 स्कोर आउट ऑफ 40 पॉइंट्स, वेरी गुड। पॉलिटिकल राइट्स वी हैव वेरी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ईवीएम इशू तो ऐसा कुछ है नहीं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, हर कोई वोट दे सकता है। एनीवन कैन बिकम अ पार्लियामेंटेरियन, है ना, एनीवन कैन बिकम ए पीएम if we have the political funding। So political rights category India got 34 out of 40 points, very good। But the problem is there in this civil liberties categories, we have been seeing the various kind of protests in our country, the lynching issues also and the privacy issues also, surveillance issue also। So because of that India has got very low score in civil liberties categories and India got 37 out of 60। That's why the ranking of India was seen as the worst decline among world's 25 largest democracies। ये जो रैंकिंग होती है जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, बिकॉज इट्स ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो इट हैज़ टू बोरो द मेथोडोलॉजी फ्रॉम समवेयर। तो इन्होंने कहाँ से बोरो किया? दिस रिपोर्ट डिराइव्स इट मेथोडोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिस थिंग केम इन 1948 बाय द यूनाइटेड नेशन। वहाँ ढेर सारी जो एक चार्टर बताया गया कि जो है
यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स क्या होनी चाहिए, तो दिस रैंकिंग बाय द यूनाइटेड स्टेट्स बॉडी यूजेस द सेम मेथोडोलॉजी एज डिक्लेयर्ड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 195 कंट्री सर्वे किए गए थे, मैंने आपको पहले ही बताया, और स्कोर के क्या कंपोनेंट थे, पॉलिटिकल राइट्स और आपके सिविल लिबर्टीज। पॉलिटिकल राइट्स फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल प्रोसेस, वेदर इट इज ट्रांसपेरेंस और नॉट, एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन और नॉट, एनीवन कैन स्टैंड फॉर ए सीट और नॉट, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है या नहीं है, इंडिया में तो बहुत अच्छी है, पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, इंडिया में वोटिंग का परसेंटेज भी अच्छा है, कुछ स्टेट्स में तो 80% तक चली जाती है, एंड गवर्नमेंट फंक्शनिंग, यहाँ पे भले हम थोड़े वीक हो सकते हैं, लेकिन ये 3-4 कंपोनेंट में से एक है, तो आवर स्कोर इन पॉलिटिकल राइट इंडिकेटर वाज प्रेटी गुड। प्रॉब्लम वाज इन सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज के इंडिकेटर्स इन्होंने क्या रखे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। There are many people in India saying currently that they are not having the freedom of expression and belief. If they say anything, they are being attacked for their voice. Associational and organizational rights. There have been protests, but protest पे जो है लगाम भी लगाई गई है। Rule of law फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स, है ना। ये सारे जो कंपोनेंट हैं वो सिविल लिबर्टीज में आएंगे। और आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फॉर एग्जाम्पल आपका आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का। रिपोर्ट ने ये नोट किया कि लॉन्ग टाइम से यूनाइटेड स्टेट्स वाज कंसिडरिंग इंडिया एज ए काउंटरवेट टू चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स वाज सेइंग दैट इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सो वी कैन हैव ए वेरी गुड बॉन्ड. But recently the view is changing. Some people are saying that, and this report in fact is saying that there has been a view that India is moving towards the direction China was moving. So India is becoming a little autocratic. We can't say that exactly China because we have a huge gap. China is a completely communist authoritarian country. But still there is a view that India is attracting similar criticism that were levied against China. So is this the thing that United States have very good freedom? No. The condition in United States also has degraded. Condition is in India is also degraded. So both of the countries are seeing some kind of authoritarian government. So that's why our report says that India's civil liberties have declined, and among the 25 largest democracies, India has seen the worst decline. You can see the previous rankings. In 2020, I told you the component score, I told you 35 out of 40 in political rights, and in civil liberties India got 37 out of 60, and the overall score was 71 out of 100. In 2019 India's overall score was 75, okay, and before that we had 77. So see, the consistent decline is there, India's score. And we need to know top 5 countries in the free categories. We need to know only the top one, which is Finland. Again, see the Nordic countries, Finland, Norway, Sweden, Netherlands, Luxembourg. Bottom 5 countries, very poor, and the countries which are facing violence and democracy is at stake. Botswana, Peru, India is also in bottom. Okay, in free category. I told you, na, there are categorized, countries are categorized. So in the free category, जहाँ मतलब 85 तक रैंक थी, वहाँ पे इंडिया थी, टिमोर लेस्टे साथ में था, और उसके नीचे देखिए जस्ट एक ट्यूनीशिया था। अगर इंडिया ट्यूनीशिया के नीचे चले जाए तो इंडिया जो है वो फ्री कंट्री में काउंट ही नहीं होगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस पार्टिकुलरली सेड दैट इंडिया में पर्सनल ऑटोनॉमी में देयर हैज़ बीन ए ह्यूज डिक्लाइन, एंड प्रॉब्लम लाइज इन USA also, see United States also, and India also. So the world's 2 largest democracies are being criticized. They are not providing the complete freedom level to the people of their nation. So this is the problem, and this is highlighted in this report by Freedom House, United States based NGO. Now let us start with our 5th topic, that is the last topic, Gender Social Norms Index. यहाँ देखिए नाम में ही है Gender Social Norms, है ना। तो सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं वो जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ हैं, मतलब या फिर बायस्ड हैं, जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ हैं, बायस्ड हैं, उसके सपोर्ट में हैं। ये आपको देखना है जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स से। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, United Nation Development Program, and this is the first edition of this report. Why first edition? Because this report also came in the context of commemorating the Beijing Declaration, Beijing plus 25. That's why this is the first edition, and we don't know whether this report will be released again or not. Okay, so the report commemorates the 25th anniversary of the adoption of Beijing Declaration and Platform for Action, Beijing plus 25. I already told you. एंड यहाँ पे ये नोटिस किया गया कि नो कंट्री हैज़ अचीव्ड जेंडर इक्वालिटी. द सेम थिंग इज सेड बाय ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट ऑल्सो.
global gender gap report, sorry, global gender gap report also. Now in the comment section, can you tell me which body releases the global gender gap report? And that body, regarding that body, a question came in 2019 prelims itself. So please tell me which organization releases global gender gap report, and if you know the name of the organization, please also tell me 4 to 5 other reports released by that very important organization. And this gender social norms index report says that for for parting the gender gap in economic opportunity, it will take 257 years. Okay, वीमेन और मेन के बीच में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में इतना ज़्यादा गैप है कि इट विल टेक अस 257 years to part that gap or close that gap. I told you already that this gender social norms index is regarding the social beliefs. The report sees that, observes that how can in a society the social beliefs can obstruct gender equality. You know, in our culture only, there is a culture that women eat after the men have finished their eating. So sometimes they eat less, right? In Odisha, in some families, there is a culture that women don't eat the dal itself, and the dal has protein. So this is some social belief which is creating gender equality issues in India. Also take for example Sabrimala issue, gender equality issue. So these are the problems, and the components, the dimensions it uses, the GSNI uses the dimensions of political, educational, economic and physical integrity. So overall, it says that how does your social beliefs negatively impact the political, educational, economic and physical integrity of the women compared to the men. वाइड स्प्रेड बायस जो हैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 80% के पॉपुलेशन में, उसको ये रिपोर्ट देखती है 75 कंट्रीज को देख के, जहाँ पे वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन सिचुएटेड है. Also, we need to know that they give a score. That score is from 0 to 1, and higher you go in this score, the worse it is. Higher score means, in this GSNI, higher score means there is a huge bias against gender equality. So suppose one country, the score is got by one country 1. So that indicates that there is absolute bias against gender equality in that society. And also there is no country without bias against gender equality. Every country has some form, little or more, some form of bias against gender equality. Now come to the highlights of the index. The highlights are very sad. The highlights are that about half of the world's men and women feel that men make better political leader. Can you see that? We have seen Sushma Swaraj, Indira Gandhi, Sonia Gandhi are not the political leaders. They are very good political leaders. They were, in fact, Indira Gandhi and Sushma Swaraj are not alive anymore. And Sonia Gandhi is very good political leader, at least for the Congress. So we can say that this is not true, but still there is a belief in men and women both that political leaders, men make the better political leaders. And this thinking is by the world's half of the population. About half of the world's men and women believe the same, that men make better political leaders. Also, over 40% feel that men make better business executive. Is it true? Is it true? Remember Indira Nooyi, Arundhati Bhattacharya, Biocon, Majumdar ji. These are women leading an organization, business executive at the top level. But still 40% of the people believe that no, men make better business executive. This is also not true, but there is a social belief, and we are measuring that social belief through GSNI. Also, some people believe that men have more right to a job when jobs are scarce. मतलब job की कमी हो गई तो it is better to give the job to a man, not woman. Some people believe that woman will be having babies later. She will be having problem working. So it is better to do the job. It is better to give the job to a man because he will be staying there for a long time when jobs are scarce, obviously. So this is the thinking of the people. Very sad. More women in labor market are paid less than men and also are not preferred for senior position. And this is a situation of glass ceiling. Now I want to explain you. Glass ceiling is that कोई organization में जब recruitment होती है, at the time of recruitment, at the initial phase only women are eliminated most of the time. Okay, the filtration is done and more men are taken, thinking that women won't be able to work a lot. She will have to do the household work also, which is a truth also. She will be bearing the child, so she will be taking leaves. She will be going up from office early. So at the recruitment level only, the women are recruited less, and also the payment is also less. And
in senior positions, men rise higher and women after rising to a particular senior position, there comes a virtual ceiling that not after this, your promotion is limited, not after this. Obviously there have been exceptions, but this tendency of women not rising to the senior positions, initially not recruited in a proportionate number, that is called glass ceiling. Why glass ceiling? Because this is virtual ceiling. कोई रूल नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता ऐसा कि women को नहीं लेंगे, but still there is a mentality and bias, and that creates the glass ceiling. Also, survey said that in Standard and Poor 500 companies, we have only 6% CEOs who are women. Only 6%. Other than that, 94% CEOs in Standard and Poor 500 companies are men only. The worst thing which came by this report, we came to know about this report from this report, is that 28% of the people think that it is justified when a man beats his wife, which is very sad. This thinking is by women and men both. That is very sad. 28% people think that a man when beats his wife, that is justified. So these are the very sad findings of this report, and these are its dimensions: political, educational, economic, and physical integrity. It has indicators also, dimension index also, which are not important, but last comes gender social norm index. This is how it is derived: dimension, indicator, and dimension index. Dimensions you should know: political, economic, educational, and physical integrity. Now here I stop, and because so many reports and indices came by United Nations, so I just want to tell you the United Nations bodies, the principal organs of United Nations, that will be a boost in your prelims preparation. Now I am explaining you. So see, these are 6 principal organizations of the United Nations. There are various organizations in United Nations, but these are 6 principal organizations of the United Nations. फर्स्ट इज UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. इसमें सारे जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर नेशन होते हैं इसके पार्ट होते हैं. एवरी ईयर अ मीटिंग इज कंडक्टेड. फॉर एग्जांपल योर प्राइम मिनिस्टर गोज देयर, अ मीटिंग इज कंडक्टेड एंड द वेरियस डिसीजंस आर टेकन बाय UNGA. लेट्स नॉट गो इन डिटेल. Second is United Nations Secretariat. Obviously, Secretariat to help all the functions of United Nations General Assembly, just like you have Rajya Sabha Secretariat, Lok Sabha Secretariat. Third is very important, UNSC, and it is in news. Why? See, UNSC has 15 members. 5 members are permanent. वो परमानेंट मेंबर वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार जीती थी, राइट? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, उसके बाद क्या? उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, देन रशिया, 4 हो गए. उसके बाद इटली, सॉरी नॉट इटली, फ्रांस. ये 5 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड वार जिन्होंने जीती थी. दे आर इट्स मेंबर्स. यूएनएससी, दे आर परमानेंट मेंबर्स. दे हैव द वीटो पावर ऑल्सो. Now the body has 15 members. So other 10 members are non-permanent and they are made members for 2 years. And recently news has come 2 or 3 days ago that India has become the non-permanent member for 2 years. 2 years means not your financial year, 2021 complete and 2022 complete. But these people, 10 members, don't have the veto power. That you should know. And then comes the ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो आईसीजे का जहाँ भी जुरिस्डिक्शन होगा वहाँ पे ये चीज़ें देख सकती हैं बिटवीन नेशंस. एंड आईसीजे हैज़ 15 टोटल जजेस एंड वेरी स्पेशली one judge has tenure of 9 years. That you should remember. Tenure of the judge in ICJ is 9 years and there are 15 judges. Those judges come from various countries and in that also UNSC and UNGA has some component to decide over that who will be the judge. ECOSOC, Economic and Social Council. The name says all. It looks on the economic and social issues of the world. And the last one, 6th one is Trusteeship Council. This particular organization is almost dead. Trusteeship Council was created to look after the countries which were under colonial rule and not independent. But all the countries under the colonial rule are now, they have taken the freedom, and the last country which was remaining, that also has taken the freedom. So this organization is kind of defunct, kind of dead. But these 5 are very active and doing the work of the United Nations. That's what I wanted to tell you. That's how the lecture finishes. We see you in the next lecture and we will be completing the Feb month current affairs which relates to reports, indices and rankings. That's all. Take care.